Hello everyone, I'm back with Techniques of Para Jumble Part 2. In Techniques of Para Jumble Part 1, we discussed 7 techniques of acing Para Jumbles. And in today's session, we are going to learn the remaining techniques of Para Jumbles. So let's get started. Such a thought-provoking quote by Winston Churchill. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. In short, I can say that perseverance ultimately will pay off. And do not forget that together we make it happen. Okay, so just have a recap of the part 1 techniques of Para Jumble. In part 1, we discussed all these strategies, all these techniques to solve Para Jumble. Transition words, chronology technique, demonstrative pronoun, personal pronoun, time tense technique, and acronym. So now let us discuss the remaining techniques of Para Jumbles. First is cause effect. बेटा कॉज का मतलब होता है रीजन और इफेक्ट का मतलब होता है इम्पैक्ट. तो किसी रीजन से वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंस हुआ है, उस पर कुछ इम्पैक्ट हुआ है. तो इफ आई गिव यू द एग्जांपल, हेवी रेन्स इट कॉज फ्लडिंग. सो व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट? मे बी मेनी रोड्स वर ब्लॉक्ड. तो दिस कैन बी मैंडेटरी पेयर. दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी इजी पीसी, राइट? नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन टेक्निक. एक्सप्लेनेशन में अ पर्टिकुलर सेंटेंस इज गिवन और अगर आगे उसको वो इलैबोरेट करना चाह रहा है तो you just have to go for those particular sentences जहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे का इलैबोरेशन हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ, द आर्टिस्ट स्टाइल वॉज ट्रूली यूनिक. यूनिक थी, बट यूनिक क्यों थी? मे बी यू हैव टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस जहाँ पर उसने उसका इलैबोरेशन दिया हो. नाउ इलैबोरेशन कैन बी से मे बी द वाइब्रेंट यूज ऑफ कलर्स क्रिएटेड अ सेंस ऑफ डायनामिज्म. तो मे बी इसी वजह से वो यूनिक रहा होगा. तो यस, दिस कैन बी अ मैंडेटरी पेयर. डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल. डेफिनेशन में वो आपको पर्टिकुलर वर्ड दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल से ट्रांसजेंडर, उसका मीनिंग दे सकता है, उसका एग्जाम्पल दे सकता है. फोटोसिंथेसिस उसको एक्सप्लेन करेगा और उसका एग्जाम्पल देगा. तो इफ आई टेक फोटोसिंथेसिस, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स दे कन्वर्ट लाइट टू एनर्जी. सो व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल? एग्जाम्पल कैन बी से लीफ, इट यूजेस क्लोरोफिल टू कैप्चर सनलाइट. तो पहले हमने आपको डेफिनेशन दे दिया, उसके बाद उसका एग्जाम्पल था. तो यस, ये आपके एग्जाम में एक एक बीकॉन लाइट की तरह हो सकता है कि यस ये मेरा एक मैंडेटरी पेयर है. नाउ अनदर टेक्निक कैन बी जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल. आपको मैं दोनों के एग्जाम्पल्स दूंगी सो दैट आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा. तो अगर मैं जनरल टू स्पेसिफिक की बात दूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल? फर्स्ट, जनरल मीन्स आई एम नॉट अटैकिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग इन अ जनरल वे. मैं सभी के बारे में बात कर रही हूँ. बस स्पेसिफिक का मतलब होता है अगर मैंने ग्लोबली कुछ वर्ड बोला तो हो सकता है मैंने एग्जाम्पल किसी कंट्री का ले लिया, तो वो हमारा क्या हो जाता है? जनरल टू स्पेसिफिक. तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनलाइज्ड कम्युनिकेशन. तो इसका स्पेसिफिक क्या हो सकता है? स्पेसिफिक कैन बी yes, social media platforms have connected people across vast distances. तो ये इसका क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो गया. उसी तरह से अगर हम स्पेसिफिक टू जनरल में जाए तो हमारे पास बहुत लिविंग एग्जाम्पल है. आज की डेट में हम सभी ने पैंडेमिक को फेस किया है. तो आपको पता है कि पैंडेमिक तो बाद भी हुआ है, बट पहले वो आया कहाँ से था? इट केम फ्रॉम चाइना. तो चाइना क्या हो गया? एक जेनेरिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया. एंड जेनेरिक विल बी दैट इट स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा जब मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था एक टेक्निक ट्रांजिशन टेक्निक. तो ट्रांजिशन टेक्निक में हमने वर्ड डिस्कस करे थे कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स, बट, व्हाइल, हाउएवर, ऑल्दो, दो. तो इन ट्रांजिशन वर्ड्स के बेसिस पर आप नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस को सेग्रीगेट कर सकते हैं. बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट अगर आपके पैरा जंगल में नेगेटिव सेंटेंसेस आर देयर, पॉजिटिव सेंटेंसेस आर देयर, तो डू नॉट गो दिस वे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेवर. आप पूरे पहले एक साथ पॉजिटिव लिखिए और एक साथ नेगेटिव, और मे बी ऑल नेगेटिव टुगेदर एंड ऑल पॉजिटिव टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दीज कंट्रास्टिंग वर्ड्स. नाउ नेक्स्ट इज कंपैरिजन टेक्निक. कंपैरिजन टेक्निक एक बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग मैंडेटरी पेयर होता है जिसके बेसिस पर आप राइट सीक्वेंस पर पहुंच सकते हैं. नाउ व्हाट इज कंपैरिजन टेक्निक? मे बी वहां पर सिमिलैरिटीज हो सकती है, डिससिमिलैरिटीज हो सकती है. तो अगर मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड या फिर मॉडर्न लर्निंग मेथड. तो ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड किस पर रिलाई करती है? सेंटेंसेस. ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड
relies on repetition, tautology. Unlike traditional method, modern learning method, it creates what? It develops critical thinking, critical reasoning. लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन. प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसी टेक्निक है जो आपको आरसी में भी देखने को मिलेगी, पारा समरी में देखने को मिलेगी, हर जगह ये आपको देखने को मिलता है. So obviously a good author normally it always starts with the problem, and after telling you the consequences, impacts and the effects of those problem, he gives you the solution also. So if in para jumble question, if there is such kind of thing, so always give importance to the problem sentence first. It means it is going to be your first statement, और उसके बाद आकर आप देखिएगा कि क्या वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है. If yes, then that is going to be your mandatory pair. So on the basis of all these techniques, trust me, you can solve para jumble questions in a jiffy. Trust me, guys. So let's just take some practice. Now here is a practice question for you. Let me read it and let us solve it. As a result, many people suffered from respiratory issues and other health problems. Over the past few years, air pollution levels have been rising steadily in major cities. This deterioration in air quality was largely due to increased vehicular emissions and industrial activities. Consequently, governments had to implement stricter regulations to control pollution and protect public health. So after reading all these sentences, let us eliminate which cannot be the opening statement. As a result, it cannot be the opening statement. This deterioration cannot be the opening statement. Consequently, again, we can eliminate it. So we are left with B as the opening statement. So now in this statement B, you can see that the author is talking about the air pollution levels. मतलब air pollution तो हो रहा है. अब क्या उसने हमको रीजन यहाँ पर मेंशन किया है या उसने हमको इफेक्ट बताया? तो देख लेते हैं, उसने रीजन बताया हमें या उसका इम्पैक्ट बताया है. तो एयर पोल्यूशन लेवल्स हैव बीन राइजिंग. ओके, व्हाई? दिस डिटेरियोरेशन इन एयर क्वालिटी. अब यहाँ पर हम इसको, इस पार्ट को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एयर पोल्यूशन लेवल तो बढ़ा है. अब उसकी वजह से क्या होगा? एयर क्वालिटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, राइट? वॉज लार्जली ड्यू टू इंक्रीज वेहिकुलर एमिशंस एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज. तो उसने यहाँ पर उसका रीजन भी बताया है दैट इफ एयर क्वालिटी इज रिड्यूसिंग, सो व्हाट इज द बेसिक रीजन? तो दिस इज द रीजन. यस, so soon after B I can write C. And if this is the reason, is there an impact? So let us check it out. As a result, many people suffered from, okay, so this is the impact, this is the reason and this is the impact. So soon after C I can keep A. And now see the beauty and the flow of this particular paragraph, that author has also given us the word consequently, as a result of which governments had to implement मतलब it might be a recommendation, it might be a suggestion. तो ऑथर ने हमको सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं दिया, उसने हमको हमारा सॉल्यूशन भी दिया है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि अगर प्रॉब्लम भी है तो सॉल्यूशन डेफिनेटली एंड में ही आएगा. सो आई कैन कीप बी एट द एंड. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू टेक्निक्स यहाँ पर वर्क कर रही है. वन इज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड सेकंड इज problem solving technique. So BCAD is the right sequence. I hope you got how to target para jumbles now. Second paragraph. Research suggests that sleep plays a crucial role in consolidating memories and processing emotions. This is because during deep sleep, the brain strengthens neural pathways that store information. As a result, students who sleep well before an exam tend to perform better than those who stay up late studying. Can you see the comparison point over here? Sleep is essential for cognitive functions like learning, decision making, and problem solving. Now, when you start solving this particular paragraph, so let us eliminate that which sentence cannot be my opening statement. This is because it cannot be the opening statement. As a result, cannot be the opening statement. And now, in this particular paragraph, students will actually get confused between A एंड डी. मतलब कौन सा इसमें से ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, क्योंकि मुझे दोनों ही बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं. बट नाउ लेट अस सी. रिसर्च सजेस्ट दैट स्लीप प्लेज. तो यहाँ पर रिसर्च हमें सजेस्ट कर रहे हैं, और सजेस्ट वो क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहा होगा. स्लीप इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक लर्निंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही क्या जा रहा है? जेनेरिक जा रहा है, जहाँ पर ऑथर इज टॉकिंग अबाउट स्लीप, राइट? और फिर उस पर इलैबोरेशन हुआ है. रिसर्च ने हमें कुछ सजेस्ट किया है कि स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
So after D, I can say it is A, right? Now it plays a crucial role in consolidating memories and processing emotions. अब इसके बाद सेंटेंस कौन सा आ सकता है, या तो एज अ रिजल्ट या दिस इज बिकॉज, बट अगेन एज अ रिजल्ट हमें क्या बताता है, एज अ रिजल्ट हमें बताता है इट्स अ कंक्लूजन, राइट? और अगर हमें एक कंक्लूजन बता रहा है, सो ऑब्वियसली कंक्लूजन कैन नॉट कम इन द मिडस्ट ऑफ द सेंटेंस, फर्स्ट आई हैव टू फिनिश द एंटायर थिंग. तो कंक्लूजन को हम कहाँ रखेंगे, एंड में रख देंगे. तो सी विल कम एट द एंड. सो नाउ व्हाट इज लेफ्ट, बी, and B will come over here. So DABC is the right sequence. I hope you enjoyed today's session, and please keep learning all these techniques of Para Jumbles and be a master of Para Jumbles. Do not run away from Para Jumbles. Okay, face it and tackle it. Together we will make it happen. Thank you so much.